So the grand success of crash course given by ICRA in 2020 is destined to be repeated in 2021. Biggest gift of this program, biggest. In case you decide to join for the GS program next year, you will get this 5,000 relaxation. This course is very good, is also very good for new aspirants who are planning to give in 2022 and 23. For them it will be a boon. In this course they will know what exactly to do in prelims. It's not only for those who are appearing in 2021. It's for all the future aspirants. This 5,000 will help you to save at least your 50,000 and many of your mental hassle. As you took it happily last year, you will again come to us for the revision, for the preparation of this examination, and hope to see you soon in ICRA. Thank you. Hi everyone, welcome to ICRA IS, and today we'll be discussing test number 9, which is of Science and Technology. 28th February ko hua tha. So like I always say, that the aim of our discussion is to make an attempt to develop the right approach of handling questions, and today we'll be doing the same. We'll be doing the things in the same direction. So like I always say, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first question we have is, consider the following statements regarding alloys. Alloys ke regarding kuch statements hain. The first statement says that alloys are the mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method. Okay. Second statement says that brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Yes, this is very correct. Third statement says alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable compositions. Correct. That is why it is called an alloy. So here, as our first statement says that it is a mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. See, for example, I'll tell you the example here. The example of this could be, suppose, combining an iron with non-metallic carbon or silicon produces an alloy of steel. So that's that could be the example of alloy. So keeping that in mind, all the statements mentioned here are correct. Hence, option number D becomes our correct answer for question number 1. Moving on to the next question, question number 2. Some statements are given regarding solution. Let's just read them out. The first statement says, the component of solution that dissolve the other component in it, usually the component present in the larger amount, is called solute. यहाँ बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में component present होता है, we call it solute, but this is not right. The component which is present in the larger amount is called solvent. This is a very basic science question. उसको हम solvent कहते हैं. I used to remember this with keeping in an example of sugar and water in my mind. कि sugar is always a solute and water is the solvent, and we mix them, and if we mix them up it becomes a solution. So that's how I used to remember it. You can have your own examples definitely, but this is called solvent, not the solute, the component which is in larger amounts. Hence statement 1 becomes the incorrect statement. Statement 2 dekhte hain. Aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. Correct. These contain carbon dioxide as solute and water as solvent. So this statement is very much correct. Hence option B becomes the correct answer for question number 2. All right, moving on to the next question. Question number 3. Which of the following statement is true? Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. कि chromatography से हम वो वाले solute separate कर सकते हैं that dissolve in the same solvent. All right. This statement is correct. Second says that air is a homogeneous mixture and can be separated into its component by fractional distillation. तो इसको हम air को हम fractional distillation से separate कर सकते हैं. Now what this fractional distillation is? Fractional distillation is a separation of mixture into its component or a part or fractions, as the name indicates. Like for example, chemical compounds are separated by heating them to a temperature at which one or more fractions of a mixture will
vaporize, and that's how we'll be able to separate it. Okay, so here both the statements are correct, hence option C becomes the right answer of question number 3. Moving on to the next question, question number 4. Which of the following statement is true? Litmus solution is a purple dye, right? It is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. They're talking about lichen and is commonly used as an indicator. Indicator as in, we've already discussed this in a previous discussion that yes, it is an indicator species क्योंकि ये pollution को indicate करता है. जहाँ पर pollution होता है lichen वहाँ पर नहीं grow करते हैं. So that is why we call them indicator species. They indicate the presence of a pollution in the particular area. Alright, so this first statement is correct. Second statement says when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. So yes, when this happens, its color is purple, hence our option C becomes the right answer for this question. Moving on to the next question, question number 5. Consider the following statement regarding pH. pH के regarding कुछ statements दिए हुए हैं. First statement says a body works within the pH range of 7.0 to 7.8. Yes, मतलब थोड़ा neutral to थोड़ा सा basic की तरफ जाता है. Correct. When pH of the rain water is less than 5.6, उसी को हम acid rain कहते हैं. Definitely if you have seen that pH meter, तो उसमें 7 is the neutral and the left side is the acidic ones and the right side is the basic one or the alkali ones. Okay, the third statement says tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. जब ये acidic की तरफ हो जाता है then tooth decay starts. So this statement is also very well correct, hence option D becomes the right answer for this question. All right, moving on to the next question, question number 6. Which of the following types of medicine is used for treating indigestion? This is a very basic question. Indigestion हो गया तो उसके लिए हम antacids ही use करते हैं. This is a very common question, आप सभी को पता होगा ये. So nothing much to explain over here. Okay, moving on. Question number 7. Which of the following will show Tyndall effect? Tyndall effect इनमें से कौन सा solution या फिर कौन सा solution show करता है? A very general science का बहुत सा basic सा question है. Salt solution? No, salt solution Tyndall effect नहीं show करता है. Water definitely not. Copper sulfur solution भी नहीं करता है. Starch solution is the one which shows Tyndall effect. So that's the right answer for this question. Question number 8 says that consider the following regarding compound के regarding कुछ statements given हैं. First statement says a compound is a substance composed of 2 or more elements chemically obtained with one another in a fixed proportion. Yes, it is correct. Second statement says कि constituents जो होते हैं compound के उन्हें हम physical method से आसानी से सेपरेट कर लेते हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि इस फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं. वी नीड केमिकल मेथड्स टू सेपरेट देम. हाउ कैन वी सेपरेट द compounds, the two compounds mixed together by physically separating them? That's not possible. For this, to explain this in a little more detail, I like to take you to the answer slide. This is the answer slide. So there's a difference between mixture and compound given, wherein, let me first tell you the answer. The statement we've just read, कि the constituent can be separated only by the chemical or the electrochemical reactions, not by the physical methods. Mixtures can be separated by the physical methods, not the compounds. So that is the thing here. Okay, moving on. Okay, so if statement 2 is the incorrect statement, so we are only left with the first statement. Hence, option A becomes the correct answer for question number 8. All right, moving on to the next question, question number 9. DNA fingerprinting is a method used to identify an individual from a sample of DNA by looking at unique pattern in their DNA. Okay, and DNA barcoding is a process to identify a species rather than an individual. Alright, this DNA barcoding में यही होता है, where we identify a species rather than an individual. or DNA fingerprinting is also the same which is given here. DNA fingerprinting actually is a chemical test that shows the genetic makeup of a person, or
or some other living things. It is also called DNA profiling. आपने DNA profiling के बारे में भी सुना होगा. DNA profiling and DNA fingerprinting are the same things, where we basically determine the individual DNA characteristics which are as unique as our fingerprints. All right. So and where do we use it? उनके applications basically forensic science में काफ़ी ज़्यादा application apply होते हैं वो. Like for example, if we have to compare the two criminal suspects, तो हम उनका DNA fingerprinting match करके देख लेते हैं so that we can identify who is the real culprit. All right. So option C becomes the correct answer for this, as both the statements given above are correct. Moving on to the next question. In poorly ventilated building, which one of the following inert gas can be accumulated? So poorly ventilated building में कौन सी inert gas accumulate हो सकती है? For this, radon is the gas which accumulates in the poorly ventilated buildings. Moving on to the next question. Question number 11. Transcription के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं. Let's understand what transcription is और transcription में क्या होता है. Transcription, the first statement says that the process of producing two identical replicas of DNA from the original DNA molecule, इसको हम transcription कहते हैं. No, it is not the transcription. Option B says the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA. So yes, this is called transcription. Okay, जब हम एक strand of DNA लेते हैं and we copy its information into RNA, that is what we call transcription. Okay, so B is the correct answer. Actually there's a whole process of it. पहले transcription होता है, फिर translation होता है, जहाँ पर proteins आगे जाके बन जाते हैं. All right, so for this is very basic. Just go through your NCERTs one to know more about these topics and to comprehensively cover them at least once before you sit in the final examination. All right, moving on to the next question. Question number 12. In the context of transport system in plants, consider the following statements. Statement 1 says xylem transport products of photosynthesis from leaves to the other plant, to the other parts of the plant. So this is an incorrect statement here, because xylem जो होता है, it transport products from soil to the plants, right? Not leaves to the other plant. So soil से extract करता है products को, and then it transfer to the plant. On the other hand, the second statement says phloem moves water and minerals obtained from soil to the leaves. Again, this is also an incorrect statement. Actually, both the statements has been exchanged. यहाँ पर it should be phloem, and यहाँ पर it should be xylem. Okay, so phloem, what it does, it takes products through photosynthesis from leaves and it transfer it to the other parts of the plant. So both the statements are has been reversed here. Okay, hence both the statements are incorrect. Statement number 3 says transpiration helps in the absorption and upward movement of water from roots to the leaves. So this is the correct statement. Hence only 3 is the correct. That is why C becomes the right answer for this question. All right, moving on to the next question. Question number 13. Consider the following statement with respect to mandate of Department of Biotechnology. So biotechnology, what it does, it promotes large scale use of biotechnology. Yes, it does. It support R&D and manufacturing in biology. Very correct, it does. It is also meant for environmental conservation. So this is not one of the mandate of Department of Biotechnology. Hence this is an incorrect statement. So B becomes the correct answer for question number 13. All right, moving on. Question number 14. Antioxidants के रोल के बारे में पूछा हुआ है. एंटीऑक्सीडेंट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है? So an antioxidant is a molecule that inhibit the oxidation of other molecule. Exactly, बिल्कुल ये सही statement है. As the name only indicates that it is an antioxidant. ठीक है, antioxidant है which inhibits the oxidation. All right, तो therefore हालांकि हमारा first statement ही सही है, but in the examination, while you make sure that you read all the statements, right? Do not jump to the answer just by reading one statement. Make sure that you read all the statements, okay? So we'll just read them out now also, so that हमें वो एक habit पड़ जाए सारे. Even if अगर हमें solution हमें मिल जाता है, just go through them all the statements एक बारी, right? So it is an enzyme which increases the intake of oxygen during the process of respiration. No, they make more hemoglobin that
can bind more oxygen per unit quantity of blood? No. They allow body to release I'm sorry, more carbon dioxide during respiration? No, no, no. How does it is not even related to antioxidants. So hence A is the correct answer for this question. Moving on to the next question. Which of the following statement is correct regarding superconductivity? Superconductivity, it is achieved when resistance is in a medium becomes zero. Yes, जब कोई resistance नहीं होता है, जब resistance absent हो जाता है, that is when the superconduction या फिर conduction happens basically. तो resistance का zero होना जरूरी होता है, hence it is a correct statement. Next statement says a superconductor can carry a current infinitely, I'm sorry for the pronunciation, infinitely without losing any energy. So this is also an correct statement. Hence option C becomes the correct answer for question number 15. Moving on to the next question. CFL और LED lamp के बीच में difference पूछा हुआ है. Statement 1 says, to produce light, CFL uses mercury vapor and phosphorus, while LED uses semiconductor material. So this is an correct statement. CFL हमारा mercury और phosphor यूज करता है और LED semiconductor material यूज करता है. The average lifespan of CFL is much longer than the LED lamp. So this statement over here is an incorrect statement because the life of LED bulb is usually up to 50,000 hours or more, while the life of CFL bulb is up to 8,000 hours. So this becomes an incorrect statement. Statement number 3 says, a CFL is less energy efficient as compared to LED lamp. Yes, correct. So answer C becomes the right answer. That is 1 and 3 are the correct statement, not the second one. Alright. Question number 17. What is the difference between Bluetooth and a Wi-Fi device? Okay, तो Bluetooth okay, हम इसका एक अलग से we'll try to do it in a different way. We'll first read the whole answer of this and then we'll try to find out which statement is the correct statement over here. Alright, so for this, let's move with me to the explanation of this question. Okay, Bluetooth and Wi-Fi provides wireless communication, right? And uses radio signals for doing so. We know this. The main difference between them is the purpose behind its designing. So that's the whole purpose and that's the entire difference. Bluetooth is essentially used to connect short-range devices for sharing data, or Wi-Fi का basic काम क्या होता है? It provides high-speed internet access. So this is the basic difference जो कि हम सबको ही पता है. Another difference is that limited number of devices has provision to connect with the Bluetooth के साथ कुछ limited number of devices connect हो सकते हैं. On the other hand, Wi-Fi के साथ ऐसा कोई limitation नहीं है. Bluetooth is used when speed is not a concern and low bandwidth is allocated to it. Wi-Fi के साथ high bandwidth का वो होता है, as the speed of internet is an important factor there. So these are the major differences between them. तो इसी से हम पता लगा सकते हैं. Let's read the statements now. Bluetooth uses 2.4 GHz radio frequency band, whereas Wi-Fi इतना use करता है. No, this is an incorrect statement. Bluetooth is used for wireless local area network only, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network only. This is also not an correct statement. When information is transmitted between the two devices using Bluetooth technology, the device have to be in line of sight of each other. But when the Wi-Fi technology is used, devices need not to be line of sight of each other. So this is the correct statement over here. Hence, option C becomes the right answer for question number 17. Moving on to the next question, question number 18. Recombinant DNA technology, जिसको हम genetic engineering भी कहते हैं. This allows genes to be transferred. कहाँ हम genes transfer कर सकते हैं using genetic engineering technology? That is what this question is asking. Across different species of plants? Yes, we can do this.
From animals to plants, yes, we can do this. From microorganisms to higher microorganisms, yes, we can do this as well. Hence, option D becomes the right answer. जो भी अच्छा, there's I like to tell you this point here कि जो भी कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी, अगर किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी वो ऑप्शंस होते हैं कि दीज आर द एप्लीकेशंस, दीज ऑल आर द थिंग्स वी कैन डू यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही होते हैं. मतलब कुछ वेग सा ना दिया हो अनटिल एंड अनलेस, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही बहुत ही विविड होती हैं. सो दैट इज़ one point you can remember here. Moving on to the next question, question number 19. Consider the following statements. Active immunity is when ready-made or pre-performed antibodies are directly injected into the body. Okay, this is not how it happens. ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअली. जो रेडीमेड जो हम इंजेक्ट करते हैं, बेसिकली जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. जो रेडीमेड इम्यूनिटी आते हैं, इट इज़ नॉट द एक्टिव इम्यूनिटी. तो बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया यहाँ पर. सो दिस इज द definition of passive immunity, not the active immunity. Whereas the second statement says that the passive immunity is the one developed by person's own body. So this is active immunity basically. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं. हेंस अच्छा, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट कौन से हैं, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं. तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Moving on to the next question, question number 20. Consider the following with respect to key elements of National Biotechnology Development Strategy to 2015 to 2020. Okay, the first statement, the first element is building a skilled workforce and leadership. Yes, correct. Revitalizing the knowledge environment at par with the growing bioeconomy. कि knowledge को हम एक equal level पे लेके आना है with the growing economy. Yes, this is also correct. Nurturing innovation, translational capacity and entrepreneurship. This is also correct. Hence, option D becomes the correct answer. ये तीनों ही element है National Biotechnology Development Strategy का. Moving on to the next question, question number 21. A cell is the structural and functional unit of living organism which is capable of independent existence. This is the very basic question. ये तो शायद हर एक बच्चे को पता होगा. So this is the correct statement. Option 2 says prokaryotic cell does not have a well organized nucleus. This is also correct statement. Make sure that प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, इनके एक बारी जो मेजर डिफरेंसेस है, मेक श्योर यू रिमेंबर देम. ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का कुछ तो अब की बार भी यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो कुछ बेसिक साइंस एक बारी आप मेक श्योर यू रीड देम बिफोर यू एग्जाम. यू रीड इट एटलीस्ट एक दो बार तो आप रिवाइज करके जाना. सो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statements is true regarding photosynthesis in the plants? Again, a very general basic science question. For most plants, rate of photosynthesis does not increase at higher temperature. हाँ जी, higher temperature पे ऐसा कुछ नहीं है कि increase हो जाएगा. Fall in rates of photosynthesis takes place when temperature rises above 40 degrees Celsius. So that is the range given here. Therefore, both the statements are mentioned over here are correct. Hence, option C becomes the right answer for this question. Question number 23. Consider the following statement. Influenza virus के regarding कुछ statements दिए हुए हैं. अच्छा, influenza virus ऐसे ABCD, there are 4 types. ठीक है, ABCD करके 4 types of influenza होता है. यहाँ पर A और D के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं. Let's just read them out. A virus are found in different animals including chicken, pigs, horses and whales. Okay. Yes, it is found in them. D virus primarily affect cattle and are not known to affect or infect or cause illness in people. तो हाँ, D virus हम लोग में ज़्यादा infection उसके करने के ज़्यादा chances नहीं होते, वो cattles में ज़्यादा primarily it is found. So both the statements are correct here. Hence option C becomes the right answer. Question number 24. Consider the following statements regarding antigen test फॉर डिजीज डायग्नोसिस. अच्छा, अभी एंटीजन और एंटीबॉडी जो भी टेस्ट कोविड के टाइम पे चल रहे हैं, तो ये एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड, प्लाज्मा, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं. मेक श्योर यू प्रिपेयर देम. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द टेस्ट इज डन ऑन द ब्लड सैंपल
of a suspected patient. Okay. Second statement says it detects if a person was infected by the disease in past. I guess both the statements over here are incorrect statement. Yeah, both the statements are not correct. I'll tell you why. I'll take you to the answers for this. We'll go in little detail of this answer as it is important. तो वहां पर लिखा हुआ था कि ब्लड सैंपल यूज करके होता है. But it is not so. The sample of rapid antigen test is taken through nasal swab या throat swab हम लेते हैं, nasal swab लेते हैं. That is how it is tested, not by taking the blood sample. Blood sample जब हम लेते हैं तो वो antibody test हम उसको बोलते हैं, right? So that is the difference over here. An antigen test reveals if a person is currently infected with pathogen. तो currently infected हम बता सकते हैं, past का infection हम उससे नहीं generally detect कर पाते. So that is the another difference. ओके तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो एंटीबॉडी के लिए दिए हुए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स एंटीजन के लिए नहीं है. हेंस डी बिकम्स द करेक्ट आंसर कि नन ऑफ द अबव, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. कोविशील्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इट इज एन एंटीवायरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी दैट इज एडेड टू फैब्रिक ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके and it has been this is not correct. ये कोविशील्ड तो वैक्सीन है, ये हम सबको ही पता है. तो इट इज़ नॉट सम एंटीवायरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और समथिंग लाइक दैट. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. सो दिस दिस इज द करेक्ट आंसर. हेंस ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. तो कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं और उनमें कौन सी वाइटामिन मिलती है या फिर कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो आपको मैच करने हैं. तो रेड ग्रेप्स में यू फाइंड एन एंटीऑक्सीडेंट्स रेस्वेरेट्रॉल. यस. मैंगो में वी फाइंड विटामिन ए. यस, दिस इज़ अ वेरी नोन फैक्ट. बनाना में वी फाइंड विटामिन B6. यस. तो ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं, करेक्टली गिवन है. तो डी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीन एडिटिंग के बारे में कुछ दिया हुआ है. बिफोर मूविंग टू दी before reading these statements, I like to introduce you कि gene editing होता क्या है. तो gene editing is a type of genetic engineering only in which DNA is inserted or deleted or it could be modified or replaced in the genome of a living organism. ठीक है. तो DNA को हम जब modification के through undergo कराते हैं, that is what we call genetic engineering or gene editing, where we are editing something, right? And what that something is DNA. All right. Now read the statements. Now we'll read the statements. It can be used to treat many human diseases and genetic disorders. HIV, AIDS और hemophilia हम सब treat कर सकते हैं. Yes, correct. We can treat. It could form the basis of highly efficient and cost-effective next generation antibiotics. Very correct. These technologies can be like highly effective in the time to come. Third statement says it can be used to bring the it can be used to bring to life the extinct species. So like I said कि कुछ भी अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं तो जनरली दे आर करेक्ट ओनली. सो हियर ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. हेंस डी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्स फैसिलिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. लेट्स रीड देम आउट. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इट इज़ अ मैकेनिज्म डिजाइन टू गारंटी रैपिड, fair, equitable access to COVID-19 vaccines worldwide. Correct, very correct. It is an initiative of European Union and Government of India. This is an incorrect statement over here. क्योंकि कोवैक्स is co-led by Gavi Alliance जो है and CEPI that is Coalition for Epidemic Preparedness Innovation and WHO. ठीक है, ये तीनों मिलके यहाँ पर बनाते हैं, ना कि यूरोपियन यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हेंस 2 becomes the, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन 1. So A becomes the right answer for this. Moving on to the next question, question number 29. Which of the following technique can be used to establish the paternity of a child? कि बच्चे का बाप कौन है, ये कौन सी वाली टेक्निक से हम पता कर सकते हैं. So this technique is DNA fingerprinting. Like we have discussed, DNA fingerprinting होता क्या है. So this is DNA fingerprinting with which we can establish the paternity or who is the father of a child. Okay. Moving on to the next question. Question number 30. Consider the following statement regarding rare disease. Rare as the name indicates, rare diseases वो diseases होती हैं जो बहुत ही rarely आपको मिलेंगी. ठीक है. Okay. Statement 1 says a rare disease is a health condition which has high prevalence. So ये word ही यहाँ पर गलत है. It does not have high prevalence. इसलिए इसको हम rare disease कहते हैं क्योंकि इनका prevalence low होता है, ये काफ़ी कम मिलती हैं.
right, and affects a large number of people. They affect a large number of people, ठीक है, but इनका low prevalence होता है, right? Genetic changes that causes disease are passed from one generation to the next. So this is the correct statement, but 1 is not the correct statement. Hence, option B is the correct answer for question number 30. Moving on to the next question, question number 31. Human digestive system के बारे में कुछ statements हैं. Let's just read them out. Pancreatic juice helps in breaking down the fats. Yes, it helps. The complete digestion of carbohydrates or fats कहाँ पर small intestine में it takes place in the small intestine. Mostly जो digestion होता है वो हमारा small intestine में ही होता है. उसके भी parts होते हैं further. तो that's a different topic. So both the statements are correct regarding human digestive system. Hence C becomes the correct answer for question number 31. I'm sorry. Moving on to the next question, question number 32. Which of the following, consider the following statements. Blood transport substances like digested food from small intestine to other parts of the body. Yes, it does. Arteries carry pure blood or veins carry impure blood. Yes, both all the statements are correct. Hence, 1, 2, 3, all the statements are correct. Therefore, option D becomes the right answer for question number 32. Moving on to the next question, question number 33. In addition to fingerprint scanning, हम कौन सी biometric identification और use कर सकते हैं, which can be used for the identification of a person. So it is iris scanning, retinal scanning और voice recognition. तो ये तीनों ही technique हम use कर सकते हैं for the identification of a person. Hence option D becomes the correct answer for this question. Moving on to the next question. Question number 34. A new optical disc format known as Blu-ray disc is becoming popular. Okay. In what way is it different from the traditional DVD? तो Blu-ray BD disc जो होती हैं, Blu-ray disc जो होती है, वो DVD से कैसे different होती हैं? That is what they are asking. Option 1 says DVD supports standard definition video while BD support high definition video. Correct. Compared to DVD, BD जो होती है, BD का जो format होता है, has several times more storage capacity. इसकी storage capacity ज़्यादा होती है. Yes, it is also correct. Thickness of BD is this, while that of DVD is 1.2 mm. So this is not an correct statement. Hence, we are left with option B, that is 1 and 2 are correct. Moving on to the next question, question number 35. A genetically engineered form of brinjal, जिसको हम BT brinjal कहते हैं, Bacillus thuringiensis जो इसकी full form है, has been developed. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना, ब्रिंजल को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना, या फिर इसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐड करना, या फिर इसको ड्राउट रेजिस्टेंट बनाना, या फिर इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना. सो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है. हमने ब्रिंजल को बीटी ब्रिंजल में कन्वर्ट करके हमें इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव वी आर लुकिंग फॉर. Question number 36. Other than resistant to pest, what are the prospects for genetically engineered plant that have been created? Genetically engineered plant के और क्या prospects हो सकते हैं? Other than pest का तो हमने पढ़ लिया कि pest resistant हम उसको बना सकते हैं, और क्या क्या उसके benefits हो सकते हैं? We'll just see. पहला क्या हो सकता है? पहला क्या to enable them to withstand drought, कि drought के against वो लड़ सकते हैं, withstand कर सकते हैं. Okay, yes they can. To increase the nutrition, बिल्कुल उनमें न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. ओके. थर्ड, टू अनेबल देम टू ग्रो इनटू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप एंड स्पेस स्टेशन. दिस इज अ रियली वीक स्टेटमेंट. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. हेंस 1, 2 and 4 are correct. That's why option C becomes the right answer for question number 36. Moving on to the next question, question number 37. Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plant to. mycorrhiza का basically कुछ आपसे importance या plus points पूछे हुए हैं. Mycorrhiza resists drought and increase absorptive area. Yes, it does. ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पीएच को भी टॉलरेट कर लेता है, और ये डिजीज इन्फेक्शन से भी रेजिस्टेंस इसमें होता है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स बिकम्स द राइट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हेंस डी इज द राइट आंसर ओवर हियर. Moving on to the next question, question number 38. Consider the following phenomena. Size of a sun at dusk. Okay.
color of the sun is at dawn, moon being visible at dawn, twinkle of stars in the sky, pole star being visible in the sky. कौन सा optical illusion है? Which one of the following are optical illusions? के कौन से examples हैं? So here the first one, size of the sun at dusk, बिल्कुल ये illusion का optical illusion का example है. Color of the sun at dawn, it is an example of. Moon being visible at the dawn is not the example. Twinkling of stars भी नहीं है. और pole star, I'm sorry, twinkling of star is the example. Twinkling of star definitely is the example of optical illusion. Therefore 1, 2 and 4 becomes the right answer for question number 38. Moving on to the next question. Question number 39. Rainbow is produced when sunlight falls on drop of rain. Which of the following phenomena is responsible for this? Rainbow formation के लिए कौन से phenomena is responsible हैं? So the first one, it says dispersion. Second is refraction. Again, a very basic science question. सारे बच्चों को शायद मतलब बच्चों को भी पता होगा ये तो this is dispersion और refraction दोनों ही helpful होते हैं in the formation of rainbow. इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो नहीं होता है. वो तो ऑप्टिकल फाइबर्स और वहाँ पर यूज होता है. सो दिस विल नॉट बी द आंसर. आई मीन दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो 1 and 2 becomes the right answer. Moving on to the next question, question number 40. Which of the following are cited by scientists as evidences for continued expansion of universe? कि क्या कुछ evidences दिए हैं expansion of universe के? First statement says detection of microwaves in the space. No. Observation of redshift phenomena in the space. Yes. Movement of asteroids. नहीं, इससे कैसे पता चलेगा? Asteroid अगर move कर रहे तो उससे कैसे पता चलेगा whether the universe is expanding or not? The last statement says occurrence of supernova explosion in the space. No, this is not the reason. So option B becomes the right answer for question number 40. That is, by observing the red shift phenomena in this space, we can see whether the universe is expanding or not. Moving on to the next question, question number 41. Electrically charged particles from space traveling at speed of several hundred kilometers per second can severely harm living being if they reach the surface of the earth. What prevent them reaching the surface of the earth? A very interesting question कि क्या prevent करता है उनको यहाँ पहुँचने से? The earth magnetic field divert them towards pole. Okay. Ozone layer around the earth reflect them. नहीं, ozone layer तो कैसे reflect करेगी? Moisture in the upper layer of atmosphere prevent them. नहीं, अगर वो एक बारी अंदर आ ही चुके हैं तो how can a little moisture can prevent them go out? None of the statement A, B, C are correct. So here option A is correct कि जो earth का magnetic field है वो उनको divert करने में help करता है. Hence option A becomes the correct answer for this question. Moving on to the next question, question number 42. Ball bearings are used in bicycles, cars, etc. क्यों हम उनको use करते हैं? Because why? The effect, the effective between is reduced area of contact wheel and axle. This is the right answer for ball bearings जो हम bicycles और cars में use करते हैं. This is the correct reason for using them in the bicycles. Okay. Moving on to the next question, question number 43. It says the known force of nature can be divided into 4 classes. Gravity, electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force. With reference to them, which of the following statement is not correct? इन चारों forces के regarding कौन सी statement सही नहीं है? Gravity is the strongest of the force, so no, this is not the right answer. Electromagnetism act only on particle with electric charge. Yes, this is the correct statement. Weak nuclear forces cause radioactivity. Yes, strong nuclear force hold proton and neutron inside the nucleus of an atom. This is also correct. Hence, this is not correct और वो incorrect ही पूछा हुआ है. So A becomes the right answer for question number 43. Moving on to the next question. Stem cells के regarding कुछ questions पूछे हुए हैं, कुछ statements दिए हुए हैं. Stem cells can be derived from mammals only. Okay, we'll see. Stem cell can be derived from mammals only. तो नहीं, हम सिर्फ mammals से नहीं, मतलब mammals only is the culprit behind this. Second statement says
Yeah, second says stem cells can be used for screening new drugs, right? Stem cells can be used for medical therapies. Of course, that's the entire purpose behind this. So B is the right answer. 2 and 3 are the correct statements over here. Moving on to the next question. The surface of the lake is frozen in severe winter, but the lake at the bottom is still liquid. इसका क्या reason है? तो इसका reason बहुत simple है कि the density of the water is maximum at 4 degree Celsius, इसलिए वो नीचे से पानी ही रह जाता है. All right, moving on to the next question. Question number 46. Question is question number 46. Lead ingested or inhaled is health hazard, right? After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the sources of lead poisoning? Lead poisoning के क्या क्या sources हैं? So smelting units, pens and pencils. अच्छा, pens और pencils तो बिल्कुल भी lead का कोई लेड पॉइजनिंग का कोई वो नहीं है, सोर्स नहीं है. पेंट्स कुड बी, या पेंट्स आदि सोर्सेस. और हेयर ऑयल और कॉस्मेटिक्स में भी लेड नहीं होता. तो स्मेल्टिंग यूनिट्स एंड पेंट्स, देयरफॉर बी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रूट स्टोर इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ. कि अगर ठंड में रखते हैं हम उसको तो ज़्यादा स्टोरेज लाइफ रहती है, इसलिए हमारे यहाँ पर इतना स्टोरेज का वो भी रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन हमें यहाँ पर अपने फ्रूट्स की अच्छी करनी चाहिए. अलॉन्ग विद दिस हमें कोल्ड चैम्बर्स बनाने चाहिए ताकि उनकी लाइफ इंक्रीज हो सके. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड देयर एंड दैट इज व्हाई दे एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ इन द कोल्ड टेम्परेचर. दैट्स द रीजन ओवर हियर. That's the reason, not region. I'm sorry. Okay. Moving on to the next question. Question number 48. Which of the following is an example or the examples of chemical change? Chemical changes के examples पूछे हुए हैं. तो crystallization of sodium chloride, नहीं ये this is not the example. Melting of ice is not a chemical change. Souring of milk is a chemical change. ठीक है. So C is the right, B is the correct answer for this. Only souring of milk here is the chemical change का example. Moving on to the next question. Non-metals के regarding कुछ statements given हैं. The non-metal are either solids or gases except bromine, which is a liquid. Yes, this is the correct statement. And iodine is a non-metal but it is lustrous. तो generally क्या होते हैं, जो non-metal होते हैं वो lustrous नहीं होते, but iodine is one जो कि non-metal है but it is lustrous. So here both the statements are correct. Hence option C is the right answer for this question. Which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Iron frying pan को, जो लोहे का frying pan होता है हमारे पास, उसको rusting से हम कैसे बचा सकते हैं? उसको rusting से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है that we apply coating of zinc to it, right? So that's the best way we have out there. Hence option B, I guess. Yes, option B becomes the correct answer for question number 50. Moving on to the next question. 51 कहता है an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. वो कौन सा element है? So that element is calcium, which is also soluble in water. So that's the calcium. is इनमें से अगर हम देखें तो कार्बन, सिलिकॉन और आयरन में से, right? Moving on to the next question. Food cans are coated with tin and not with zinc. तो हम food cans को tin से कोट करते हैं, zinc से नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि zinc costlier होता है. नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं रीज़न हो सकता. ऑफ कोर्स कोई तो केमिकल रीज़न ही होगा. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर हम उसको उसकी कोटिंग जिंक से कर देंगे तो इट विल कीप ऑन रिएक्टिंग, इसलिए वी कोटेड विद टिन, नॉट विद जिंक. All right, moving on to the next question. Question number 53. Which of the following statement is true regarding aquaponics? Aquaponics क्या होता है? Aquaponics represents the relationship between water, aquatic life, bacteria, nutrient dynamics, plants which can grow together in waterways all over the world. Yes, this is the correct statement कि पानी में और सब उसके nutrients उसी पानी में और उसी एटमॉस्फेयर में, उसी में हम सारे न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया, वट एवर इट इज़ नीडेड फॉर अ प्लांट टू ग्रो, अगर हम प्रोवाइड करा देते हैं, उसको हम एक्वापॉनिक्स कहते हैं. एक्वापॉनिक्स यूजेस 1/10 ऑफ द वाटर ऑफ सॉइल बेस्ड गार्डनिंग एंड इवन लेस वाटर देन हाइड्रोपॉनिक्स or recirculating aquaculture. So yes, it uses less water than the other techniques we have. So both the statements regarding aquaponics are
Correct. Moving on to the next question, whole genome sequencing क्या होता है? Whole genome sequencing is ostensibly the process of determining the complete DNA sequence of an organism's genome at a single time. एक ही single time पे complete genome जब हम पता कर लेते हैं, whole, that is why this whole word is mentioned over here कि whole मतलब एक ही time पे we determine the complete DNA sequence of an organism. So this is the correct statement over here. First organism जिसका हमने पूरा genome sequence किया था was Haemophilus influenza. Haemophilus influenza का ही किया था, right? So both the statements are correct. Hence C is the right answer for this question. Moving on to the next question, Nobel Prize chemistry का किसको मिला था? Was awarded jointly to, you please see the pronunciation में वैसे भी क्या ही रखा है, तो Emmanuel Charpentier एंड जेनिफर ए डोंडा वॉज और ये इन्होंने क्या डिस्कवर किया था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो इन्होंने क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था, विच इज़ जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज अ सिजर्स काम आती है, जो बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वी यूज़ देम, ओके, फॉर एडिटिंग, एज अ एडिटिंग टूल. All right. Moving on to the next question. Question number 56. Which of the following statement is true regarding TB, global TB report? India accounts for 26% of TB cases all over the world. Yes, this is the correct statement. And WHO publishes this report every year since 2010. No, WHO 2010 से इसको हर बारी नहीं publish कर रहा है, उससे पहले से कर रहा है. So this is the incorrect statement. Hence ऑप्शन ए becomes the correct answer here कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है regarding TB, Global TB Report 2020. Moving on to the next question. Question number 57. While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened, जो कि जनरली हो जाता है, उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है that the fuel is not burning properly, या फिर वो complete burning उसकी नहीं हो रही है फ्यूल की. Incomplete burning की वजह से this generally happens. Moving on to the next question. कार्बन का एलोट्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है? तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कार्बोनिक एसिड नहीं है, ऑफकोर्स. बाकी डायमंड, ग्रेफाइट और C60, जो कि बकमिंस्टर फलरीन जिसको हम बोलते हैं, ये तो है ही कार्बन के एलोट्रॉप्स. Moving on to the next question. Question number 59. Which of the following is correct regarding catenation? Catenation एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने, I'm sure आपने 11th-12th NCERTs में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के में. The first statement says carbon has unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecule. और इसी प्रॉपर्टी को हम catenation property कहते हैं. Yes, this is correct. Most common example इसका catenation का element that exhibit catenation are carbon, silicon, जो बाकी और elements के साथ जब वो bond अपना बना लेता है, उसी property को basically हम catenation कहते हैं. So both the statements are correct over here. Moving on to the next question. Superconductivity के regarding कुछ statements दिए हुए हैं. It is a state in which material shows absolute zero electrical resistance. बिल्कुल, it is correct. Superconducting material can save huge amount of energy and can be used for highly efficient electric appliances. एफिशिएंसी भी इसकी वजह से बढ़ती है. सो येस, एफिशिएंसी इसकी वजह से डेफिनेटली इंक्रीज होती है. एंड recently IISc researchers have reported superconductivity at the room temperatures as well. So this is the new dimension of this phenomena called superconductivity. तो यहाँ पर तीनों ही statements are very correctly mentioned. Hence C becomes the right answer for this question. Moving on to the next question. Question number 61. Consider the following statement regarding trans fats. Again, a very important topic for our exam. Trans fat आए दिन मैं देखती हूँ कि काफ़ी बार ये न्यूज़ में होते हैं. So make sure आप एक बारी अच्छे से you go through it, you understand what exactly are trans fats, उनके क्या impact होते हैं हमारी बॉडी पे. Okay. तो ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड. बिल्कुल नहीं, सैचुरेटेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट. और इफ यू सी माई वीकली लेक्चर्स, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट ट्रांस फैट आर एग्जैक्टली, क्या होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके बैड इफेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी पे, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द हेल्थ इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द स्टेप्स आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग, व्हाट आर द करंट डायमेंशंस. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन माई वीकली कंपाइलेशन. सो मेक श्योर you just go through it once to know about trans fats more. तो ये unsaturated होते हैं. These are not saturated, these are unsaturated. Hence 1 becomes the incorrect answer. तो अच्छा, अगर 1 यहाँ से हट जाता है तो A और C तो वैसे ही cancel out हो रहे हैं, right? We're left with B और D. तो या तो B ठीक है यहाँ पर या फिर D ठीक है. Okay, let's read the
Next statement, when vegetable oil are heated or when they're hydrogenated, उसी से trans fats बनते हैं. So yes, this is the correct statement. Or trans fat is bad for human health, very correct, and has been linked to a number of problems, especially heart diseases बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उससे. तो इसीलिए they are a cause of concern, especially regarding our health. So, which is the correct statement? B. Option B is the right answer here. That is 2 and 3 are the right correct statements. Moving on to the next question. Art के related कुछ questions statements दिए हुए हैं. Assisted reproductive technology, जो कि हम generally infertility को ठीक करने के लिए जो हम technology use करते हैं, उस technology के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं. Option 1 says, assisted reproductive technology includes medical procedure used to primarily address the infertility. Definitely, it addresses the infertility. That's the major agenda behind this technology. Art involves procedures such as in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection, cryopreservation of gametes or embryos, and the use of fertility medications. Absolutely right. These are the techniques we use in assisted reproductive technology, जो कि जनरली क्या, जो कि इनफर्टिलिटी को एड्रेस करने के लिए ही हमने यूज़ करनी शुरू करी है. So C becomes the right answer for this. Moving on to the next question. Question number 63. MOM, that is Mars Orbiter Mission के बारे में कुछ question पूछा है. Statement 1 says, it is also called मंगलयान. हाँ जी, इसको मंगलयान बोलते हैं. is a space probe orbiting Mars, जो कि 24 सितंबर 2018 से ऑर्बिट कर रहा है. सो दिस यहाँ पर ये डेट के साथ थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर. अच्छा, डेट्स एक्चुअली जनरली आपको याद नहीं रखनी होती, बट आई टेल यू व्हाट, कुछ बहुत ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. जैसे मंगलयान was such a big mission for our country. तो वो कब हुआ उसका तो हम एक आइडिया डेफिनेटली रख सकते हैं. सो it is orbiting since 2014, not 2018. So that's the catch in this question. So 2014 should be here. Hence option A, statement A becomes incorrect here. It is India's first interplanetary mission and it made ISRO the fourth space agency to achieve Mars orbit after Roscosmos, जो कि रशिया की है, NASA and European Space Agency. So this is the correct statement. Therefore B becomes the right answer for this question. ठीक है, make sure you read the statements little careful. तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो ये क्वेश्चन एकदम सही है, बट यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया. सो मेक श्योर यू रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली. दैट्स वन ऑफ a really important aspect of dealing the questions with. Moving on to the next question, question number 64. Indra 2020, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, वो किसकी है? इंडियन नेवी इज गोइंग टू होल्ड मेगा नेवल एक्सरसाइज इंड्रा 2020. कौन सी कंट्री के साथ हम ये होल्ड करने वाले? तो ये तो बहुत ही ईजी है, उसके नाम से भी पता चल रहा है. IND इज फॉर इंडिया, R इज फॉर रशिया, सो इट इज विद रशिया. All right, moving on to the next question. Consider the following statements regarding HTTV, that is hypersonic technology demonstrator vehicle. It is an unmanned scramjet demonstration aircraft for hypersonic speed flights. Yes, this is the correct statement. Or the program is run by DRDO. This is also the correct statement. Therefore, both the statements are correct here. So both 1 and 2 is the right answer here. Moving on to the next question, question number 66. Again, एक genetic engineering के ऊपर एक question है. Genetic engineering is the direct manipulation of an organism gene using biotechnology. Yes, that's what we do. कि हम manipulate करते हैं genes को. That's what we do in genetic engineering, or you can call it some kind of modification we do. Second statement says an organism that is generated through genetic engineering is considered to be genetically modified and resulting entity is genetically modified organism. और जो भी हम genetically modify करते हैं जिस organism को, उसको हम genetically modified organism कहते हैं. This is as basic as that. So this is also a correct statement. ये तो बहुत ही easy statement है. Third statement कहता है कि the first GMO was bacterium जो कि was a bacterium generated by Boyer and Cohen in 1973. So this is not the correct statement here. Therefore 1 and 2 are the correct statement, not the third one. All right.
Moving on to the next question. Question number 67, it says vegetative propagation क्या होता है? Vegetative propagation is a sexual method of plant reproduction that occurs in its leaves, root and stem. So vegetative propagation, make sure it is, you remember कि ये sexual method नहीं है reproduction का, ये asexual method है reproduction का. यहाँ पर कोई दो entities नहीं involve होती हैं, sexually नहीं involved होती है to produce a new one. So this is a asexual method of reproduction. तो statement 1 तो यहाँ पर गलत हो गया, तो ना तो both 1 and 2 हो सकता है, ना A आंसर हो सकता है. Example of vegetative propagation is tuber of potato, rhizome of ginger. This is correct. So B is the right statement here. Okay, B is the right option here. Moving on to the next question, question number 68. The flower may be bisexual when it contains either stamen or pistil. No, this is an incorrect statement. Again, ये दोनों statements को यहाँ पर reverse कर दिया गया. अगर वो bisexual है तो उसमें दोनों ही पार्ट्स होंगे ना, उसमें स्टेमन भी होगा, उसमें स्टेमन भी होगा और उसमें पिस्टल भी होगा. एंड इफ इट इज यूनिसेक्सुअल तो उसमें ईदर एक ही चीज होगी, ईदर स्टेमन और पिस्टल, राइट. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है. थर्ड स्टेटमेंट से स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट इज येलोइश इन कलर. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेमन जो होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. और इफ इट इज यूनिसेक्सुअल, अगर कोई प्लांट या अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें either stamen will be present or pistil will be present. But if it is bisexual, so it has to contain both the parts, stamen and pistil both. इसलिए हम उसको bisexual बोलेंगे. जैसे पपाया और वाटर, जैसे नॉट पपाया, जैसे मस्टर्ड में होता है, राइट. सो कौन सा यहाँ पर सही हुआ? ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर हियर, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हियर. ठीक है, मूविंग ऑन. हर्ट की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है. कार्बन डाइऑक्साइड रिच blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed. Okay. No, this is not the correct statement. Oxygenated blood from lungs has to be brought back to the heart. नो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थोड़ा ना हर्ट के पास लेके आएंगे. और हर्ट के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, ताकि वो प्योरीफाई होके फिर से वो सारे बॉडी पार्ट्स में जा सके. सो अगेन दिस इज, आई एम रियली सॉरी, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन अगेन. आई एम रियली सॉरी. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for a carbon dioxide to be removed. Okay. Actually, all the statements which are given here are correct. ठीक है, the first one is also correct, the second one is also correct, and oxygen rich blood जो होता है from lungs come out to the thin wall upper chambers of the heart on left and right left atrium. Yes, this is also correct. तीनों ही statements यहाँ पर सही हैं, but the question is asking कि इनमें से incorrect कौन सा है. तो none of them are an incorrect statements. Okay, moving on to the next question. डायलिसिस के बारे में पूछा गया है, जो कि किडनीज के लिए हम यूज़ करते हैं. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. Yes, it happens in dialysis. Normally healthy adult में initial filtrate of the kidney is about 180 liters daily. तो इनिशियल फिल्ट्रेट जो किडनी का होता है वो 180 लीटर्स होता है अगर एक हेल्दी बॉडी हो तो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इन केस ऑफ किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी कैन नॉट बी यूज्ड. अगर किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी हम नहीं यूज़ कर सकते. दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. द होल पर्पस ऑफ दिस इज दिस ओनली ना, कि आर्टिफिशियल किडनी हम यूज़ कर सकें. तो दिस इज 3 बिकम्स द इनकरेक्ट. तो बी और सी वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं. इफ़ वी नो कि 3 इज इनकरेक्ट तो बी और सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से. हेंस वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए. 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट. Moving on to the next question. Question number 71. It says the green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on leaves and convert it into the food energy. Yes, बिल्कुल सही है. There are generally a greater number of individuals at the lower trophic level ecosystem and the greatest number is of the producers. बिल्कुल सही है. Producers ही सबसे ज़्यादा numbers में होते हैं. तो but this question is asking कि इसमें से incorrect कौन सा है. So mind you, incorrect तो दोनों ही नहीं है. Therefore, D becomes the right answer for this question. Moving on to the next question. Biodegradable items पूछे हुए हैं, कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं. इनमें से कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? ग्रास, फ्लावर, लेदर. नहीं, इसमें से लेदर कैसे हो सकता है? ग्रास, वुड, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता. फ्रूट, पील, केक एंड लाइम जूस. ओके, ये सही है. और इसमें भी क्योंकि पॉलिथीन दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता. Therefore, C becomes the right answer for this question. Moving on to the next question. Question number 73. Which
with reference to food chain and ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrate the order in which a chain of organisms feed upon each other. Yes, that's how we define a food chain. Food chain are found within a population of a species. No. A food chain illustrate the number of each organisms which are eaten by others. नहीं, food chain ऐसा कुछ नहीं show करती है. Therefore, only first statement was the correct statement over here. Therefore, A becomes the right answer for question number 73. Moving on to the next question, stem cells. Again, stem cells के बारे में बाबा questions इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि stem cells is one of the favorite topics of UPSC. Stem cells, pluripotent cells और ये सब क्योंकि stem cells ही होते हैं वो. तो ये सब और कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो मेक श्योर इफ यू सी देम यू प्रिपेयर देम वेल. Let's continue with our 74th question. Stem cells are basically undifferentiated primitive cells. तो ये undifferentiated primitive cells होते हैं, बिल्कुल undifferentiated primitive cells होते हैं. Stem cells दो तरीके के होते हैं, embryonic cell एंड अडल्ट सेल, जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं. बिल्कुल. PS एंड अडल्ट स्टेम सेल्स लाइक इन umbilical cord cell or bone marrow cells that can be induced to show properties of a stem cells. So this statement is also correct. Therefore, C becomes the right answer for question number 74. तीनों ही statements सही हैं regarding stem cells. वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? दो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने इसको पेरिफेरी पर टच किया था, बट जाइलम इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर इन द plant. Hence, A becomes the right answer. What distinguishes plant cell from animal cells? Again, I told you कि plant cell animal cell का difference आप याद रखें क्योंकि वो पूछा भी हुआ है. So, this is important as well. So cell wall, chloroplast और vacuole जो होते हैं, these are the differences. एक में होते हैं, एक में नहीं होते हैं. So that is what the major differences between the two. Moving on to the next question. Ginger is a stem because ginger जो अदरक है वो stem होती है, stem of a plant. And why is it so? Because it has nodes and internode. That's how we define a stem. तो इसलिए उसको stem हम कैटेगराइज करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 78 सेज कि क्लोरोफिल का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? क्लोरोफिल में काफी सारे कंपोनेंट होते हैं. कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन भी होता है, बट सल्फर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. सो सल्फर बिकम्स द राइट आंसर हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेडन हेयर करके एक ट्री होता है. वो अच्छा यही पूछा हुआ है कि मेडन हेयर क्या होता है. सो इट इज अ टेम्परेट फ्रूट. नो, इट इज बेसिकली अ ट्री. ये सबसे बड़ा ट्री है. बोरियल एनिमल भी नहीं है, ये कोई रेप्टाइल भी नहीं है. इट इज अ ट्रॉपिकल फर्न हैविंग सिलेंडर स्टॉक फाउंड विद राउंड और वेज शेप डिवाइडेड लॉब्स. ये बहुत इट इज आई थिंक लार्जेस्ट ट्री आउट देयर. तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक या कुछ अलग सी स्पीशीज़ हैं या कुछ उनके बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, मेक श्योर कि आप एक बारी उनको देख लीजिए. यू नेवर नो, इस बारी भी कुछ तो इस बारी भी बर्ड के बारे में कुछ पूछ लिया था, कुछ नाम दिए हुए थे और फिर पूछा गया था वेदर इट्स अ बर्ड और रेप्टाइल और एम्फीबियन. सो यू मस्ट नो सच थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 80 सेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था? तो स्मिथ एंड नेथन्स डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स का भी काम करते हैं, विच बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमें लाइक सपोज दिस इज द एंटायर चेन ऑफ डीएनए और हमें उसमें से एक पर्टिकुलर पैटर्न को बीच में से काटना है, पर्टिकुलर जीन को पर्टिकुलर एडिटिंग हमें बीच में से करनी है, तो हम मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ करते हैं और वो बीच वाला पार्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर जो भी है, हम उसको कट कर देते हैं. दैट इज हाउ वी परफॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग. ऑल राइट, moving on to the next question. Question number 81 says plasmids are used as cloning vectors. For which of the following reason? प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड्स जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में. उनको अगर प्लाज्मिड्स को हम बैक्टीरियल सेल्स में डाल दें तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, इसलिए हम उनको क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज करते हैं, जो कि अपने आप क्लोन्स बना लें. राइट. Moving on to the next question. Question number 82. Which bacteria is used in the production of insulin? Insulin प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया
यूज़ करते हैं. सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल. एस्चेरिया वी यूज़, एस्चेरिया कोलाई भी जो होता है, एस्चेरिया कोलाई वी यूज़ दिस बैक्टीरिया. ठीक है, सेक्रोमाइसिस नहीं करते हम, राइजोबियम भी नहीं करते, माइक्रोबैक्टीरियम भी नहीं करते, वी यूज़ एस्चेरिया. So that's the bacteria we use for the production of insulin. Moving on to the next question, question number 83. Who which of the following established the scientific basis of vaccination? Vaccination का scientific basis, initial जो vaccination जो है वो किसने डिस्कवर करी थी? सो ही इज़ अ वेरी नोन नेम, इज़ अ वेरी फेमस नेम, लुई पास्चर. लुई पास्चर वॉज द वन हु established this. Question number 84. Yeast is an important source of yeast. में क्या important होता है? तो yeast has vitamin. Which vitamin? Vitamin D. Vitamin D होता है yeast में. So that is the importance it holds. नेक्स्ट क्वेश्चन से बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज ये कोई बैक्टीरिया है. नाम से तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा शायद कि ये बैक्टीरिया, बट माइंड यू दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ वायरस. ओके, सो इज इट अ बैक्टीरिया? नो, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया. ये कोई मॉलिक्यूलर सीजर है? नहीं, बिल्कुल. ये कोई डाई है जो हम एलाइजा टेस्ट में यूज़ करते हैं? एलाइजा टेस्ट जो कि एड्स के लिए यूज़ होता है? नहीं, ये कोई डाई नहीं है जो एलाइजा टेस्ट में यूज़ होती है. बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है बेसिकली. इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. राइट, आप अगर शॉर्ट में अगर इसको याद करना चाहो तो इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. दैट इज व्हाट बैक्टीरियोफाज इज. दैट इज व्हाई A becomes the correct answer here. Right, moving on to the next question. Question number 86 says BT cotton के बारे में कुछ पूछा हुआ है. BT toxin protein exist as inactive toxins, but once an insect ingest the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of gut, which solubilizes the crystal. So yes, दिस हैपन्स कि बाहर तो इनएक्टिव होते हैं जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, बट एक बार अगर इंसेक्ट उस टॉक्सिन को अंदर अपने ले जाता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसीलिए हमारी क्रॉप को हम प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं अगेंस्ट दी insects, against the infestation. Second statement says BT cotton is a genetically modified organism or a genetically modified pest resistant plant cotton variety which produces an insecticide to combat bollworms. So this is also the correct statement. Hence, both A and B, both 1 and 2 statements given are the correct statements. Question number 87 says the first clinical gene therapy was given to a 4-year-old girl. उसको कौन सी डेफिशिएंसी हो गई थी? जो क्लिनिकल थेरेपी, एक 4 साल के बच्चे को एक क्लिनिकल थेरेपी दी गई थी पहली बार, उसको कौन सी डेफिशिएंसी थी? उसको एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी, उसको कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसको कोई विटामिन डेफिशिएंसी, या फिर उसको कोई हीमोफीलिया जहाँ पर आपका ब्लड लॉस बहुत जल्दी होने लगता है. अगर आपको थोड़ा सा भी कट लग जाए तो हीमोफीलिया में आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अचानक से बहुत जल्दी हो जाएगा, खून रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट उसको 4 साल के बच्चे को एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 88. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. लेट्स रीड. एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा जीन को ही हम फॉरेन जीन बोलते हैं. मतलब जो हम बाहर से जीन यूज़ करते हैं उसको हम फॉरेन जीन बोलते हैं, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. ट्रांस का मतलब यही हुआ ना. ट्रांस मतलब इफ टू थिंग्स, इफ वी कंबाइन द 2 डिफरेंट थिंग्स, तो एक ट्रांस चीज़ बन जाती है. तो दैट्स हाउ वी डिफाइन इट. Today, transgenic model exists for many human diseases. Absolutely, cancer के लिए, cystic fibrosis के लिए, rheumatoid arthritis के लिए, enzymal diseases के लिए. So yes, both the statements are correct here. Hence, C is the right answer for this question. Moving on to the next question. Consider the following statement regarding genetic engineering approval committee. So, genetic engineering appraisal या approval committee functions in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. हाँ जी, इसी के अंडर आती है ये. एज पर रूल 1989, it is responsible for the appraisal of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recombinant in research and industrial production from the environmental angle. तो यही देखते हैं कि जो भी hazardous microorganisms या फिर जो भी recombinants जो हम यूज़ कर रहे हैं, दो organisms को मिला के अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली मॉनिटरिंग करने के लिए it sees. So yes, so C is the correct answer for this. I'm sorry for this. This is just a typing mistake and nothing else. This is not EFG. This is ABC. Make sure you correct it. ये ABC है. और कुछ printing mistakes और
टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत जनरल हैं, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, तो इतनी छोटी मिस्टेक्स पे मेक श्योर कि आप कोई बहुत बड़ा इशू ना बनाओ। ये शायद सेल्फ करेक्ट भी करी जा सकती हैं, इस पर कुछ इशू बनाने वाला कुछ होता नहीं है। तो ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, नथिंग एल्स, आई मीन टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, moving on to the next question, question number 90. Which of the following statement is true regarding biopiracy? Biopiracy is a term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बायो पायरेसी। तो येस, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट कि हम किसी की प्रॉपर अथॉरिटी के बिना अगर हम उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, एक तरीके से चोरी कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट वी रेफर टू बायो पायरेसी एज। द टर्म बायो पायरेसी वॉज कॉइन्ड बाय पैट मूनी, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, हेंस ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कोई से भी गलत नहीं है यहाँ पर, राइट। Moving on to the next question, question number 91. Crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because bacteria जो produce करता है toxin, उससे bacteria खुद नहीं मर जाता। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो टॉक्सिन होता है वो एक इनएक्टिव स्टेज में होता है जब तक वो बाहर होता है। फिर जो इंसेक्ट होता है, जो भी जैसे हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए जिस इंसेक्ट से हम कोशिश कर रहे होते हैं, वो इंसेक्ट एक बार ही उसको इंजेस्ट करता है, देन दैट टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। उसके अंदर जाते ही उससे पहले तक वो इनएक्टिव रहता है, इसलिए बैक्टीरिया पे वो कोई इफेक्ट नहीं डालता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड अगेन. Plasmid is a small extra chromosomal DNA molecule within a cell that is physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently. That is the major कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं, इसलिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स भी हम उनको यूज़ करते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया. हाँ जी बिल्कुल. द टर्म प्लाज्मिड वाज इंट्रोड्यूस इन 1952 बाय Joshua Lederberg. So this is also the correct statement. तो incorrect तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो D becomes the right answer कि incorrect, none of the above is the incorrect one. Alright, moving on to the next question, question number 93. It says PCR reaction के against कुछ statements given है. PCR that is polymerase chain reaction, जो कि molecules को amplify करने के लिए हम use करते हैं generally. That's the major principle of this. PCR is a method widely used to rapidly make millions to billions of copies of specific DNA sample. हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने अभी बताया कि amplify करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. Almost all PCR applications employ a heat stable DNA polymerase such as tag polymerase. हाँ जी, इसमें हम ये एंजाइम यूज़ करते हैं जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं. ये एक हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज होता है, मतलब हीट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको इसमें यूज़ करते हैं, राइट. And the third statement says the majority of PCR rely on the thermal cycling. हाँ जी बिल्कुल. So all the statements are given कि tag polymerase हम यूज़ करते हैं जो कि एक heat stable enzyme होता है, और the PCR is generally used for the amplification of the DNA samples. Hence option C becomes the right answer for this. Moving on to the next question कि कुछ ये पेयर्स दिए हुए हैं. बेसिकली ये ना एक क्लीनिंग मेथड होता है कि बैक्टीरिया की अगर हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो हम उसको किस चीज़ से ट्रीट करें सो दैट इट कैन गेट क्लीन्ड ऑफ द प्योरिटीज इट हैज़. तो बैक्टीरिया को हम लाइजोसोम से ट्रीट करते हैं, प्लांट सेल को हम सेलुलेज से ट्रीट करते हैं, और फंगस को हम काइटिनेज से ट्रीट करते हैं, राइट. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स एकदम सही अरेंज्ड हैं. देयरफॉर ए बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस. We treat bacteria with the lysozyme ताकि हम उसको एक तरीके से प्योरीफाई कर सके, क्लीन कर सके, और प्लांट सेल को हम सेलुलेज से, फंगस को हम काइटिनेज से. So A becomes the right answer for question number 94. Moving on to the next question, 95 question number. Downstream process क्या होता है? Downstream, if you want to remember downstream को एक word से आप याद रखो. अच्छा, हर एक प्रोसेस के लिए ना, हर एक टॉपिक के लिए ना, मेक श्योर कि आप ना एक कीवर्ड ढूंढ के रखो, तो वो बहुत ईजी होता है टू रिटेन सच थिंग्स. तो डाउनस्ट्रीम के लिए भी ना एक ऐसा ही
कीवर्ड है, एंड दैट कीवर्ड इज प्योरिफिकेशन. ठीक है. सो वट एवर यू सी, वट एवर कंसेप्ट यू हैव, वट एवर इन वट एवर सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, मेक श्योर कि उस पूरे का आप कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखें, जिससे आपको पूरा, अगर मेंस में भी वो हेल्प करता है, पूरा आंसर लिखने में भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको कीवर्ड्स आपके दिमाग में होंगे, प्रीलिम्स में भी आपको वो हेल्प करता है, राइट. सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग refers to the recovery and the purification of biosynthetic products, particularly in pharmaceuticals. तो pharmaceuticals में कुछ प्योरिफिकेशन जो सिंथेटिक बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्योरिफिकेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ डाउनस्ट्रीमिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. हेंस A is the correct answer, but still we'll read all the options. It is the process of multiplying DNA copies. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये तो हमने अभी पढ़ा है. That this is PCR, polymerase chain reaction is the process जहाँ पर हम multiply करते हैं DNA copies को, PCR के through हम multiply कर पाते हैं. So this is not downstreaming. This is PCR, polymerase chain reaction. Alright, it is the process of removing toxin from the plant. No, it is not like that. It is the process used in ELISA. नहीं, ELISA में हम ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते. एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम ये डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट्स को. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 96. इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ 3 पेरेंट बेबी. नहीं, इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ 3 पेरेंट बेबी. ये तो वैसे ही बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट है कि इतनी नई टेक्नोलॉजी, वो भी इतनी डिस्प्यूटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर 3 पेरेंट्स होते हैं, राइट. 3 पेरेंट्स होते हैं, 2 जिनकी शादी हो रखी है और एक जो मदर होती है, जिस सेरोगेट मदर होती हैं जो कि बच्चे को जन्म देती है. तो ये तो वैसे ही बहुत डिस्प्यूटेड सी चीज़ है, और इंडिया में तो ये नहीं, इनिशियल मतलब इनिशिएट ये इंडिया में नहीं हुआ था. इट इज़ द फर्स्ट बेबी वॉज UK was the first country to allow this technique, 3 parent babies technique. All right. सो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो अगर ये वाला इनकरेक्ट है तो ये तीनों ही ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं. B, C और D तो गलत ही हो गए, क्योंकि 1 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. कैन प्रिवेंट एनी जेनेटिक डिजीज. कोई भी जेनेटिक डिजीज ही प्रिवेंट कर सकता है. नहीं, 3 पेरेंट बेबी का ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी जेनेटिक डिजीजेज ये प्रिवेंट कर सकता है. अ टेक्निक इज टू बी यूज विल इन्वॉल्व DNA फ्रॉम 3 पर्सन. सो 3 लोगों का इसमें DNA यूज़ होता है. येस, दैट इज, इसलिए हम इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर हियर? A becomes the right answer here, right? Moving on to the next question. Question number 97. टाइफाइड फीवर इज़ कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट. हाँ जी, बिल्कुल विडाल टेस्ट करते हैं हम टाइफाइड के लिए. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं होता. ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट 2 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओनली 1 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. 98 एलाइजा के बारे में पूछा हुआ है. इट स्टैंड्स फॉर द एंजाइम लाइक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ओके, यहाँ पर शायद आप अगर पहली नज़र में देखोगे तो आपको ये स्टेटमेंट लगेगी सही कि एंजाइम लाइक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ही तो होती है एलाइजा की फुल फॉर्म, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट एंजाइम लाइक, इट इज़ एंजाइम लिंक्ड. सो दिस इज़ द कैच ओवर हियर. मेक श्योर आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करें, एंड यू कैन ओनली नोटिस सच थिंग्स व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो रीड द क्वेश्चन विद ऑल द पेशेंस यू हैव इनसाइड. ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो दिस इज नॉट एंजाइम लाइक, दिस इज एंजाइम लिंक्ड. ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 हो गया गलत. ठीक है. स्टेटमेंट 2 सेज द एसे यूजेस अ सॉलिड फेज टाइप ऑफ एंजाइम इम्यूनो एसे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ligand, जो कि एक प्रोटीन ही होता है, in a liquid sample using antibodies directed against the protein to be measured. और ये एड्स के लिए जनरली यूज होता है. तो C इज़ द राइट आंसर इसके लिए ना, क्योंकि दोनों एड्स डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट करते हैं. एलाइजा टेस्ट आपने सुना भी होगा. एड्स के लिए एक टेस्ट होता है जहाँ पर हम DNA को ही रन कराते हैं, एंड देन वी सी द पैटर्न्स ऑफ DNA. So that's the whole process. Moving on to the next question. Question number 99. Which of the following is most dangerous? Benign tumor, malignant tumor, cellular tumor or molecular tumor? सबसे खतरनाक कौन सी? अच्छा, benign tumor, benign वर्ड का ही मतलब होता है कि कोई भी अगर इनिशियल स्टेज में है ना, कि अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में आपके नहीं गई है, ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं हुई है, वो एक इनिशियल स्टेज में, तो उसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर. मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है. हेंस दिस इज़ द मोस्ट
dangerous form of cancer. Malignant tumor is always the most dangerous. इसके बाद तो शायद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा treatment available है भी, though we claim a lot of treatments, but I don't think there's a treatment available. Last question of the day is, consider the following statement regarding rDNA, that is recombinant DNA. Recombinant as the name indicates कि यहाँ पर हम दो different चीज़ों को combine करके एक नई चीज़ बना रहे हैं. Alright, so recombinant DNA molecule are the DNA molecules formed by the laboratory methods of genetic recombinations. हाँ जी बिल्कुल. Second says it brings together genetic material from multiple sources या फिर दो एक से ज़्यादा sources के हम genetic materials इकट्ठा करते हैं. We create a sequence that would not otherwise be found in the genome. ठीक है, and then we join them and we create a recombinant thing, or we call it as recombinant DNA. Therefore, both the statements are correct here. So C is the right answer for this. All right, I hope it was informative to you. With this, we come to the end of our discussion, end of our paper discussion. और जितने भी आपके marks आए हों, do not worry about it. Make sure you analyze your paper very well. You write down your weakness, you write down your mistakes. That's the whole point of this discussion, and that's the whole point of attempting questions, right? I hope you clear this exam, and all the best. Thank you so much.